Welcome to Media. Assalamu alaikum everyone. This is your host Umar Tariq. So continuing with our resilience series, खास तौर पे I talked about this in my last interview as well कि females के लिए things are very challenging because they're judged a lot, right? कभी कपड़ों पे, कभी मेकअप पे, कभी पढ़ाई पे, कभी family होने पे, कभी बच्चों होने पे, कभी ना होने पे. We always come up with a lot of reasons. और स्पेशली एमबीबीएस के बाद मेरे ख्याल है फीमेल्स के लिए इन जनरल चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं, वो जज बहुत ज़्यादा होती हैं. Also on the same note, I think there is this fear, innate fear तमाम females में कि हमें जज किया जाएगा. तो because of that, I salute, I commend and appreciate जितनी भी हमारे female interviews आ रही हैं और वो आके हमें अपनी फेलियर स्ट्रगल्स परेशानियां मुश्किलात अपना पूरा जर्नी शेयर कर रही हैं. इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज एंड ब्रेवरी टू डू दैट, टू मेक योरसेल्फ वल्नरेबल, टू शेयर योर स्ट्रगल्स जस्ट बिकॉज ऑफ द नोबल थॉट कि हमारी जो जूनियर्स हैं वो उससे उस सारी चीज से ना गुजरें और उनका कुछ फायदा हो जाए. तो ऑन दैट नोट आई वेलकम आवर नेक्स्ट गेस्ट डॉक्टर अनम बुखारी. अस्सलाम वालेकुम अनम, कैसी हैं? Assalamu alaikum, bhai. I'm good. How are you? Allah ka karam, theek thaak, first class. Thank you very much. I really appreciate you taking out the time and doing this for the juniors. Thanks for inviting me. I know it took me some time and we went back and forth, but thanks so much for giving me this opportunity. I understand, we are all busy, right? I'm a busy attending, you're busy. What are you doing? Well, we'll talk about that. So, apna journey batao from medical school till today. Kahan se ho aur phir kya kiya, sara pura apna journey apni zubani. So I did my FSC from Canadian College. I did my MBBS from King Edward Medical College. I graduated in 2011, and I also did 1 year of house job. House job ki completion ke baad, I started taking my steps. Plan to ye tha ke during house job, but I will take my step 1 at least, but obviously it becomes harder. So step 1 diya, then I got married in 2013. और वहां से हाउस जॉब के फौरन बाद शादी हुई थी. हाँ, हाउस जॉब के फौरन बाद 2013 when I got married. और स्टेप 1 जो था हाउस जॉब शादी से पहले दिया था बाद में दिया था? स्टेप 1 मैंने पहले दिया था, स्टेप 2 मैंने शादी के बाद. तो स्टेप 2 और सीएस मैंने शादी के बाद दिया था और सीएस हम लोग करने और रोटेशंस करने हम लोग इकट्ठे आए थे यहाँ पे. ठीक है. उसके बाद Did you do any electives? So I didn't do any electives. Interestingly, though I know my parents were very open-minded with everything, padho ye karo, lekin electives ke मामले में they were little bit hesitant that I don't have any relatives in US and they were just not comfortable letting me go alone. So I just let it go. I was like, okay, whatever. So electives nahi kiye the. Uske baad clinical observerships, rotations ki thi. We knew some people. उनको कांटेक्ट किया, एक रोटेशन मिली, उससे नेक्स्ट ओके इफ यू नो समवन एल्स, इफ यू कैन रिकमेंड अस. सो इस तरह करते करते हमें, एंड वी वर ऑल ओवर द प्लेस, पूरे यूएस में डिफरेंट जगहों पे रोटेशंस थी, ट्रैवलिंग अ लॉट. और 2015 में अप्लाई किया. सो नाउ चैलेंजिंग क्वेश्चन ये था कि हम दोनों मैच अप्लाई कर रहे थे, वेदर वी शुड अप्लाई कपल, वेदर वी शुड अप्लाई इंडिविजुअली. काफी लोगों से बातें पूछा और डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस थे. कुछ लोग ये कह रहे थे साथ रो इकट्ठे मैच, यू अप्लाई एज अ कपल. सम पीपल आर सेइंग इफ यू अप्लाई एज अ कपल यू बोथ वोंट मैच. सो व्हाट वी एंडेड अप डूइंग इज वी अप्लाइड इंडिविजुअली. दोनों ने अपने इंडिविजुअली अप्लाई किया और एंड में रैंक ऑर्डर लिस्ट से पहले देयर इज एन ऑप्शन वेयर यू कैन बेसिकली कंट्रोल योर लिस्ट, यू कैन मेक कॉम्बिनेशंस द वे यू वांट. और हम जब जो कॉल्स हमें इकट्ठे आई थी वहां पे हमने उनको जरूर बताया कि हम दोनों जो हैं applied individually, but actually we are a couple and we're going to participate in couple match in the rank order list. सही. So calls भी आ गई. जब rank order list बनाई काफी सारे combinations बने, weird combinations. एक program के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा. I go on match, you go on match. It was a mess. So we literally the combinations were in hundreds because the possibilities are you can match any program with anything because we didn't want to go unmatched. So वो जब result आया तो okay, so it's interesting. We matched together, but we went down on our list. So we ranked at our eighth rank order list. ये जिस program में match with it was 8th. Or both Noman and I, we wanted to do fellowship. We were aiming for the programs just my in-house fellowships, and there are more opportunities to grow further apna career. But we ended up going to a community hospital.
which wasn't bad, but initially we weren't too happy about it. But then again, like it's life moves on. So anyways, residency complete ki, residency ke dauran, like since we were both on H-1B visa, so I was pretty much sure that I'm not going to apply, like if I'm going for a competitive fellowship, I'm not going to apply on H-1, so I'm going to wait. So I had some time. I took some time initially to figure out like if it's actually a right fit for me. Kyunki logon se ye sunte the, oh, it's very hard for females, बहुत कम इस field में है, it's lifestyle ऐसा है, you won't be able to do. My husband wanted to do critical care, and when people used to hear like, oh, वो critical care कर रहा है, तुम primary care कर लो, तुम कुछ और कर लो, कोई और field कर लो ऐसी जिसमें ज़्यादा hectic ना हो. But honestly, like I did my rotations, और मैंने openly explore भी की थी some specialties. Like I did rotations. I was like, okay, everyone is saying this, I should explore. But honestly, I really ended up liking this field, and there are people who encouraged me to continue this. मैंने ये भी सुना था during our program when I used to tell people कि 2 साल wait करना है, green card के बाद apply करना है, and people were like, oh, this is a wishful thinking. पहली बात ये कि so community से cardiology में जाना is hard. दूसरी बात ये, you're going to be an old graduate after 2 years, and they don't look attractive anymore. Like people, they are not an attractive candidates, so unki profile is not that good. So you are what you are thinking is a wishful thinking. If you're thinking you're going to apply, just apply this year, like apply right in your second year. Finding research opportunities from that place was also challenging because like itni zyada koi robust research to ho nahi rahi hoti. So anyways, maine ek project second year mein shuru kiya tha in cardiac rehab with an old professor who was like lingering on with this project for like forever. So I took it, I completed it. ACP mein maine as an oral presentation usko present kiya, abstract uska publish hua, manuscript likha. So I got like some research productivity. Residency खत्म हुई उसके बाद we were looking for programs जो कि academic programs हैं जहाँ पे research की opportunities हो. दूसरा, we were also thinking like honestly जितना 3 साल में देखा था, the name of the institution matters a lot. Like आप कहाँ से आ रहे हो, आपने किधर काम किया, it speaks for itself. Like rather अगर आप सोचो कि काम तो हर जगह एक ही हो रहा है, लेकिन it does matter, like it's a fact. तो जो चीज़ मैंने, क्योंकि मेरा 2 साल का वेट था, I didn't want to screw it up. मुझे already I was worried कि will I match, will I not match, I'm old graduate. So I sat with the dean of medicine at my institute, जो कि cardiology के program director रह चुके हैं रोचेस्टर में for 20 years. And I asked him, what you look for in the candidate? क्योंकि लोगों ने मुझे बताया था 250 स्कोर होना चाहिए, पब्लिकेशंस इस तरह होनी चाहिए, मतलब जो प्रोफाइल आपको पता चलती है कि a lot of publications, 250 So sorry to interrupt you there. Residency के लिए या fellowship के लिए? Fellowship के लिए. अच्छा, That's fellowship. I'm talking about after finishing my residency before moving to Pittsburgh. Yeah. Same. So interestingly, I will tell here like openly कि मेरे scores बहुत stellar scores नहीं थे. I didn't have 250s. I had decent scores. Like my step 1 was 238, my step 2 was 235, and step 3 was 232. So like in that range. But I always heard that you need to have double 250s to apply like any competitive fellowship, जो कि एक myth है. And I know like मैंने Osama का भी interview सुना था, and he was absolutely right. Like it's one factor, but it's not all. So what he told me, basically 3 things जो कि मैं और बाकी लोगों को भी जो कि cardiology apply करना चाहते हैं and they want to do fellowship. Basically it's a recipe. You have to create that recipe. He told me scores more than 230 is fine. Yes, 250, 40 looks good, but it's not the only thing. He's like, I won't look at the candidate who only has scores and does not have anything else. Commitment to research, he also told me that make sure you first authored some manuscripts, and if you are the first author in 3 or 4, that is better than being like 5th, 6th, or 7th in line on like 10 different papers. So that was what he told me. And dusra, letter of recommendations. He told me letter of recommendations need to be stellar. And he clearly quoted like some of the things which needs to be in the letter, जो कि हम देखते हैं, or letter of recommendation कैसा होना चाहिए and all that. दूसरा उसने मुझे कहा था कि for me, क्योंकि मैं 2 साल away from the graduation में होंगी, he said like I need a letter of recommendation from my program like director of the hospital जिसके साथ मैंने 2 साल काम किया, and that has to be really good.
I have to perform. It's not like I'm going to work and not doing anything else, क्योंकि हर बंदा काम कर रहा है. So you want to make sure that the group likes you when you are very productive for the group, because that will speak like आगे तुम्हारा future क्या है. So ये मुझे एक secret ingredient, एक recipe type मिला, which I confirmed from like University of Pittsburgh में मैं मिली program director से. She also said similar things. Like even abhi this the place I'm working on, they say the similar thing. So journey start हुआ. Hospitalist initially, for what I did, like literally like during the orientation 2 weeks orientation, जैसे मुझे email address the official email address मिला University of Pittsburgh का, I reached out to people. Like मैंने काफी लोगों को email की, सिर्फ उनको जिनका मुझे पता था कि who are actively involved in research and are doing some research productivity. Like मैंने 6-7 लोगों को तो की होंगी ईमेल्स, जो कि मुझे सिर्फ 2 ने रिप्लाई किया, कुछ नहीं है कहा भी. एक ने मुझे ये भी कहा कि हमारे पास अभी प्रोजेक्ट नहीं है, we already have fellows, so let's you can check with us like after a month or so. Anyways, एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी उस पर कोई फेलो काम कर रहा था, जिसमें मुझे उन्होंने कहा कि if I'm interested. और इनिशियली लाइक वो काइंड ऑफ लाइक इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं था कि आई एम डूइंग लाइक समथिंग रियली प्रोडक्टिव फॉर देम. इट वाज जस्ट लाइक अ लॉट ऑफ डेटा गैदरिंग. लाइक आपको मतलब दे वर पेंडिंग लाइक अ लॉट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स. So I asked him like, is it possible कि मुझे कोई अपना प्रोजेक्ट दे दें? Is there any idea? I want to work on it. तो उन्होंने मुझे ये कहा कि वो हमारी प्रेफरेंस पहले फेलोज होते हैं, तुम ये करो and we'll see later on क्या होता है. So I started on that project, like रोज के 100-120 जितने भी मैंने चार्ट रिव्यूज वो डेटा एक्सेल शीट में डालना और ट्रांसफर करना वो किया. दूसरी जो अटेंडिंग थे उनके पास गई, उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा ठीक है, तो तुम अपने आइडियाज लेके आओ, अगर तुमने खुद रिसर्च करनी है, you want to start a project of your own, like bring ideas to me. And you know, like that was challenging for me initially, because आपके पास कितना experience होता है research का हमारा, like especially even training में, throughout your training, like हमने वो experience नहीं किया था कि we are like de novo think like of some idea and just like present. But I, as a kind of challenge, I was like, okay, जितना तो मेरे ज़हन में आता है, whatever. So I read his papers, like उसके interests क्या हैं, उसने पहले publications क्या की हुई हैं, what kind of things he's looking for, like in future ideas. And I came up with like 4 or 5 different ideas. उस पे मैंने background search की, उनको सारा लिखा, and I wrote like 4 or 5 different sheets of paper. और like कुछ weeks के बाद I met him again. Like मैंने उसको वो दिखाए ideas, and he like उसने मतलब मुझे काफी positive feedback दिया. And interestingly, उसी that moment में, like he just literally, oh, I have this interesting idea. What do you think about that? Like do some research and we'll start it. He literally gave me a project like right away. So what I thought, like from that thing, he probably uske paas idea pehle bhi tha. He was just testing ke, or that's what people do. Like they won't give you, like when you're meeting them for the first time, they won't like, oh okay, ye project pada hua hai, wo idea is pe kaam karo, because they want someone who can complete the project. Like otherwise उनको भी पता है कि ये एक आइडिया है, ये इस बंदे को दे दिया तो it's gonna be like lingering on forever. तो वहां से मुझे अपना पहला प्रोजेक्ट मिला था. It was data for like 18,000 patients, and it was really like a good project, जो कि मैं जिसमें मैं first author थी. I started it. फिर मैं statistician से सारा analysis plan और सब कुछ करके I presented that at AHA, and it got published as a first author manuscript. उसके साथ नाउ मेरा एक बिग फैक्टर ये भी था कि जब मैंने लोगों से पूछ लिया, एंड एवरीवन इज सेइंग कि इन 2 सालों में आई नीड टू डू रियली वेल इन द हॉस्पिटलिस्ट प्रोग्राम. तो वहां पे मैंने क्या किया, मैंने अपनी डायरेक्टर से पूछा कि कोई, क्योंकि उनमें एकेडमिक, आई वाज हायर्ड एज अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, आई वाजंट लाइक एकेडमिक हॉस्पिटलिस्ट, पोजीशंस ही नहीं थी वहां पे. तो मैंने उससे बताया, मैंने कहा एनी अपॉर्चुनिटी टू बी इन्वॉल्व इन एकेडमिक्स, आई एम हियर, लाइक जस्ट रीच आउट टू मी. तो इंटरेस्टिंगली उसमें मुझे 2 दफ़ा मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग के मेडिकल स्कूल में लेक्चर देने गई हूँ, उनके मैथ स्कूल्स के 3rd ईयर और 4th ईयर स्टूडेंट्स को. वो मैंने दिए. उसके बाद आई वाज इन्वॉल्व विद द ग्रुप, मीटिंग्स में जाना, स्केड्यूलिंग कमेटीज, ये वो. आई जस्ट वांट tell them that I am present, like so that they know, क्योंकि later on अगर मैं इनसे लेटर मांग रही हूँ, if I want them to write my letter, I don't want them to say कि उनके पास कुछ होना चाहिए ना लेटर में लिखने के लिए, otherwise वो क्या करेंगे, काम पे आती थी और चली जाती थी, and there are like many people who do that. तो anyways मैंने उसमें इन्वॉल्व किया. फिर एक QI प्रोजेक्ट चल रहा था जो यूनिवर्सिटी ऑफ ये डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन का,
which was just like tobacco counseling and the role of hospitalist and something relating with the billing and RVUs. तो ये project था जो किसी ने half baked like start किया था and never got completed. I picked it up क्योंकि ये उनका था कि ये हमने present करना है, इसका paper लिखना है. So anyways, I picked that up, I completed that, I presented in their learner teachers conference. तो ये सारी छोटी मोटी जो चीजें थी ये जमा हो गई. And after at the end of this, I was a little bit sure कि at least इनके पास कुछ ना कुछ लिखने के लिए होगा लेटर में मेरे, rather than saying कि ये आ रही थी और जा रही थी काम पे. इस सारे में दूसरा ये कि obviously आपकी personal life भी साथ चल रही होती है. Hospitalist 1 week on, 1 week off. It's not like you are a machine, so you got to enjoy your life too. So me and Oman, like we love to travel a lot. और उसके साथ साथ ये सब बखेड़े भी चल रहे थे कि पेपर लिखना है, deadlines हैं, ये उसको भेजना है. तो what worked for me back in the days, if I compare like in school life में, I was like queen of procrastination. Like चीजें पड़ी हुई हैं, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, और कभी नहीं काम किया. लेकिन इसमें I got myself a little bit more organized. Like I was literally on a timeline कि एक दिन पूरे week का schedule बनाती थी कि इस दिन मेरी डेडलाइन है, मैंने ये इसका मैन्यूस्क्रिप्ट का डिस्कशन पार्ट लिखना है या जो भी करना है रिसर्च रिलेटेड, और फिर इतने दिन मैं ऑफ हूँ, उसमें हमने कुछ नहीं करना है, we can travel or do whatever, and the next week back on track. So it was very like set schedule that I was on. Like I think like that helped me accomplish a lot of things, like अपनी research productivity और साथ साथ enjoy life. Like it's not like I was a machine and I was like not doing anything else. वो खत्म हुआ. Interestingly मेरा green card जल्दी आ गया था, 1.5 साल में I got my green card. So then I started looking at कि अच्छा अब मैं फारिग हूँ, एक और year, मतलब जब मैं apply कर रही होंगी, it will be my 3rd year of hospitalist. So I would rather look at non-accredited fellowship. Interestingly, University of Pittsburgh में एक नई फेलोशिप स्टार्ट हुई थी एमिलाइडोसिस की, और उनका दूसरा साल था जब मैंने उनको रीच आउट किया, एंड दैट वाज फिल्ड. वो जो बंदा पहले साल कर रहा था उसी ने कंटिन्यू कर लिया. माय प्रेफरेंस वाज टू लिव इन पिट्सबर्ग क्लोजर टू माय हस्बैंड. वो वहां पे है कि 1 साल के लिए मैंने कहाँ जाना है. तो I also applied heart failure in Philadelphia, and some of my class fellows really helped a lot in that process. उन्होंने कॉल निकलवाई. They never sent me interview. खैर वो भी खत्म हो गया. ओहायो केस वेस्टर्न में भी हार्ट फेलियर वालों ने पहले कहा हाँ हम आपकी एप्लीकेशन देख रहे हैं, और it was also a little bit closer to that state. So मुझे था कि अच्छा चलो शायद यहाँ तो मिल जाए. वो कह रहे हैं हम रिव्यू कर रहे हैं हम ये. Anyways उन्होंने भी 2 हफ्ते बाद कह दिया कि हमारे तो स्पॉट्स फिल हो गए हैं. ये इन 3 जगहों के बाद मुझे जरा थोड़ा ये फील होना शुरू हो गया कि मे बी दैट्स समथिंग ट्रू, कि मे बी I'm not a good candidate, maybe there is something lacking in my profile. Like कि वहां तो चलो फिल हो गई, 2 जगहों ने तो एप्लीकेशन पहले बता के हम आपको बताएंगे, then they just rejected you. तो थोड़ा सा उस टाइम पे I was little bit sad कि पता नहीं आगे क्या होगा, ये वो blah blah. फिर then I spoke with one of our juniors who connected me with someone जिन्होंने non accredited apply की थी in West Virginia University में. उन्होंने मुझे कहा कि तुम 3 जगहों पे अप्लाई करके सोच रही हो कि तुम्हें कोई नॉन accredited फेलोशिप मिल जाएगी, तो they are not that easy to get into. Like they are available, but cardiology fellows नहीं करते, लेकिन they are still competitive because a lot of candidates are applying at the same time. तो मुझे कहते हैं why not you apply a little bit more broadly. तो अब जब ये बात आई तो that means that I'm gonna go away from my husband. So that was a difficult decision. Is it like really worth it? Am I gonna go? So it was a mutual decision. Me and Oman sat down. मैंने उसे बता दिया था, मैंने कहा कि ठीक है मैं इसके बगैर ही apply कर लूँगी. And he understood like how competitive this is, and he understood that if I have a chance, at least I should apply. So we sat down. हमने कुछ shortlist kiye program. I didn't apply everywhere because I didn't want to go there. Like some states, I didn't want to go there. Alabama, Nebraska. I was living alone, and I wasn't comfortable going to these states, so I didn't apply there. Anyways, I applied, और मुझे 2 जगहों से कॉल्स आई, 3 जगहों से कॉल्स आई थी. एक प्योर रिसर्च फेलोशिप थी समवेयर इन न्यूयॉर्क, एक मुझे प्रिवेंटिव की फेलोशिप थी, बट दे वर आस्किंग 2-year commitment upfront. They are like, tell us
we will process your application if you give us 2 years commitment. So I said no to them because I wasn't sure that I'm going to do it for 2 years. And what if I match? Like, I don't want to wait 2 years to apply for a match. I was already an old graduate in that time. So anyways, Cedars ने interview किया. My interview went well. And guess what? Like, इन्होंने मेरे 2 interviews किए थे. They always, मुझे था कि I wasn't too sure. I was like, oh, Cedars Sinai, one of the best programs in West Coast. I don't know, like, पता नहीं मेरा interview कर लिया. But they actually मैं पहले interview में clear हो गई थी. And then they asked me the second one. Now we want you to interview with our faculty. Initially, program director ने interview किया, and then they wanted me to meet the whole department faculty. मैंने उस interview के लिए मैंने तैयारी की थी. I looked up everything because that was the only call left. I only have 3 and this was the 3rd one. So मैंने सारे उनके what are they doing? What kind of research is going on there? मेरा क्या experience है? What can I bring on the table? What I have done? So मैंने उस interview की ऐसी तैयारी की थी जिस तरह I am literally giving a journal cardiology fellowship interview because I didn't want to screw it up. Anyways, interview went well. 3-4 weeks के बाद उन्होंने मुझे बताया कि I reached out to them after two weeks and they said we are still interviewing, so we are not sure yet. So by the time, like, I lost hope. I was okay, उनके पास तो इतने candidates वैसे ही हैं, पता नहीं मुझे बाद में इन्होंने भी यही करना है जो case western, okay, आपको हम देख रहे हैं बहुत अच्छे candidate, and then you are like, okay, you stand nowhere. So but I just gave it up, like, okay, देखा जाएगा जो भी होगा. So एक दिन they just sent me an offer कि we interviewed or blah. Literally, like, us time I didn't know like what to say. Like, West Coast means like I'm going like continent, like literally for me it was a continent apart, like it's states apart. So anyways, Noman ghar aaya and I told him like I matched, and then they're accepting me, and then I started crying. Like, literally I started crying. I never lived alone. Like, since I came here, I don't know what to do. Like, there are a lot of things as a couple, like we both share responsibilities. Like, it's not like one person is responsible and other. So no one shares like a lot of these things, which I have no clue, no idea. Like, bill dena hai, cheezein kahan se kya jaye. Matlab, a lot of like administrative work, like he's responsible for. So anyways, बस उसके बाद अब मैं बैठी हुई हूँ कि अब मैं accept करूँ कि मैं reject करूँ. Offer Cedars Sinai से आई हुई है, तो वो भी आपको reject करते हुए भी आप 10 दफा सोचोगे पहले. Anyways, so then uske baad phir ek long discussion start hui, like between. So I want to like stop here and tell people who are a couple, like it doesn't matter like if you're in the same field or different. If you're a couple, a lot of decisions are mutual. Like you decide. It's not like, or aisa bilkul nahi hai ki ek din I woke up and I was like, oh, I'm gonna go to LA and buy. Like, it doesn't work like this. So because everything has their pros and cons. So you have to sit and discuss like iske challenges kya hain, what are we looking at. So literally before accepting, unhone mujhe 1 hafte ka time diya tha, and I took that time. Like, I didn't right away jump on it. I'm like, okay, so there we accept your you're expected to reply like in 1 week. So मैं और नोमान रुके, पहले मैंने रोना धोना डाला कि मैंने अकेले नहीं रहा जाएगा. How would I manage? Like, I don't know anything. I have never lived in West Coast. So उसके बाद Noman actually again, like, he found a solution. Like, honestly, like, I feel I won't be able to do anything. Like, all my major steps in everything, wherever I have fallen, wherever I was doubting myself, it was always my husband who was supporting me. He believed in me and he always supported me. So I don't think so I will ever be able to thank him enough for his support, like, to be honest. So anyways, what he found a really cool solution. So he changed his contract. He's like, okay, I will reduce my contract. I will schedule all my shifts earlier in the year so that you don't have to be there all by yourself all the time. So I will be available there. So he reduced his contract. Usne kafi help ki settling down. Anyways, I came here to Cedars. Cedars mein, the things that they were doing, microvascular ischemia, CRT, reactivity testing, all this was like very new to me. Like, half of the stuff I didn't even understand. And now I'm a fellow there. So अब क्या किया जाए? Like, half of the terminology तो मुझे पूछते हुए भी होता था. The way they're like, should I ask? Like, what should I do? So I started reading about it.
like चीजें पढ़ी समझी, like and उनके पास Cedars have 3 fellows in this fellowship. So I was the MRI like fellow who was responsible for all the MRI scans and all that. And MRI was like totally different for me, like uski terminologies, like a T1 mapping, ECV kya hai, pre, post contrast, like it was too much for me. Like just like right after the training, I had no experience whatsoever. छोटी मोटी बुक्स देख के ऑनलाइन जिस तरह करके थोड़ी बहुत बेसिक समझी just so that I don't want to look at like really dumb person who is coming here and is not knowing anything. I started in July. मेरी दफा मैच जो था वो one month delay हुआ था. It was in August. मुझे लोगों ने ये भी मशवरे दिए कि अब तुम यहाँ आ गई हो, ask them for a letter. Like tell them you started in July. After a month, ask them for a letter of recommendation. So I did. I asked them for a letter of recommendation and they told me they can write a letter for me, but they told me how important the letter is for fellowship. The same thing जो कि मुझे बार-बार program directors कह रहे थे सारे. It has to be stellar, otherwise it doesn't mean anything. They're like, we can give you a letter. We know that you are very hardworking, you're responsible, and things like that. Generic चीजें जो सारे जो कि norm है. But we need to know you more to write you a really personalized letter. So whether you want to have a letter or not. So उन्होंने मुझे मेरे हाथ में डाल दिया कि आप letter चाहिए इस तरह का या नहीं, which I said no because I know कि मुझे क्या बताया गया था कि letter किस तरह का होना चाहिए, and I don't want someone to say hardworking, coming to work, punctual. Like this is a requirement from everyone. This is not something जो कि आप letter में which is considered as like a good letter. तो लेटर नहीं था सीडर्स का. अब मुझे ये था कि मैं मैच में अप्लाई कर रही हूँ, मेरे पास इनका लेटर भी नहीं है. आई नीड समथिंग, आई रियली नीड समथिंग टू शो देम दैट आई कैन वर्क एंड आई एम बीइंग प्रोडक्टिव हियर. लाइक व्हाट एम आई डूइंग हियर इन दिस फेलोशिप. सो आई स्टार्टेड इन जुलाई से ही मैंने जो है प्रोजेक्ट्स वगैरह देखे एंड आई केम अप विद 4 आइडियाज, क्योंकि इनके पास बहुत सारा रिसर्च स्टाफ है, काफी सपोर्ट काफी थी विच वाज रियली हेल्पफुल, और आइडियाज वगैरह भी काफी थे जिनको आप ट्वीट कर सकते हो. आप अपने आइडियाज देते हो, उनको लोग ट्वीट करते हैं. तो आई केम अप विद 4 प्रोजेक्ट्स जिनके मैंने एब्स्ट्रैक्ट लिखे एंड आई सबमिटेड टू ACC एंड आई पुट इट इन माय CV कि मैं जो है ये प्रेजेंट कर रही हूँ ACC में, मैंने भेजे हैं, समथिंग टू टॉक अबाउट ड्यूरिंग माय इंटरव्यूज. तो एट द एंड अच्छा उसके बाद मैच अप्लाई किया, मुझे इंटरव्यू कॉल्स थी मेरे ख्याल से 10 और 11 इंटरव्यू कॉल्स थी. उसमें से मैं सारे इंटरव्यूज देने गई थी. देयर वर सम प्लेसेस जहाँ पे मैं आपको बता दूं. अच्छा, एक बहुत बड़ा एक मिथ है. अब ये आप मेरी सारी जर्नी देख रहे हैं, सारा जो whatever I have done, लेकिन इसके बावजूद people don't know that these things goes behind the doors. They just think like something is served to you in plate. I have heard these comments from some people who are saying, "Oh, आप तो लड़की हैं, आपको टेंशन की क्या बात, लड़कियों को तो वैसे ही आजकल ले रहे हैं कार्डियोलॉजी में, वो सारा जो शुरू नहीं हुआ वुमेन इन कार्डियोलॉजी, तो आप तो मैच हो जाएंगी." And honestly, I couldn't say anything. I was like, okay, whatever. So, but honestly, I went to some interviews where I felt like this field is really male dominating, or aapko, there were some people who were upfront like saying stuff like, oh, बंदियां तो बस ये करने के बाद ये कर लेती हैं, इंटरवेंशन नहीं होती उनसे, बंदियों का ये होता, मतलब people were saying, their fellows were saying this thing, their faculty members were asking, what are your family plans, how are you gonna live without your family if you match here because your family is there, like personalized questions, like literally. And there were some programs I didn't have good experience just interviewing. And honestly, when it came to rank order list, I sat down with one of my class fellows who was really helpful to discuss the list because he has been through this process. So he told me, and I told him कि मेरी help करो rank order list बनाने में, कि मैंने किस तरह rank order list बनानी है. इस सारे प्रोसेस के दौरान साइट पे ये था कि मेरे हस्बैंड ने भी मैच अप्लाई किया हुआ था, उसको यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग से प्री मैच ऑफर आ गया था एंड ही टुक इट. मुझे पिट्सबर्ग से कोई कॉल्स नहीं थी, पिट्सबर्ग में वैसे ही 2 प्रोग्राम्स हैं, और मुझे उसके आसपास से कॉल्स थी, रेडिंग से थी, गाइसिंगर से मुझे कॉल थी. But the problem was I had better calls, like in programs से ज़्यादा मेरे पास अच्छी calls थी. Then it was a decision making again, like what should I do? Like I know living in Pennsylvania also means
commute by car, like 6 घंटे 4 घंटे की drive है. Will I rank those programs, or I just rank the programs based on their credibility, like कि अच्छा ये अच्छा program है तो ये. Anyways, this was the toughest decision, I will say. Like looking back, I feel अगर मुझे Pittsburgh से call आती, like उस area से आती, I won't think a moment. Like I will just do it. I was like, doesn't matter, Allegheny है, community or whatever, जो भी programs हैं, even कोई और भी program होता, अगर Pittsburgh में होता, so I wouldn't have given it a second thought. But now that I didn't have call from that area, I was just questioning, like 2 साल की मेहनत, ये सब कुछ खज्जल खवारी करने के बाद, is it really worth it कि मैं एक प्रोग्राम जो पेंसिल्वेनिया में बिल्कुल नया ब्रांड न्यू, उनका मेरे यहाँ से दूसरा मैच था इस साल, will I go there, will I be happy, like a lot of things. कुछ जगहों पे पेंसिल्वेनिया में इंटरव्यू दिया, I didn't get good experience. Like the interview experience told me कि I'm gonna be just there as just a representation कि हमने एक बंदी बस भी रख लिया इस साल, लेकिन mostly they had the same mentality. I didn't have good experience at all. तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अनमैच चली जाऊंगी, लेकिन मैं कुछ जगहों को रैंक नहीं करूंगी. I didn't rank all the programs, and I swear I really didn't. मैंने अपने क्लास फेलो से डिस्कस किया, मैंने उसको बताया सारा कि ये मसले, मतलब मुझे अपनी इन कॉल्स में ये प्रॉब्लम लगी, इंटरव्यू में ये हुआ. तो I will also say here कि it's not like I was being overconfident or anything. It's just like whatever decision you make, you live with itself, like whether you will be happy or not. And the other thing, I had a little bit of security. I had a backup plan. So I was thinking if I don't match, I did well at Cedars, and they enrolled me in their clinical scholars program. So I was in their clinical scholars program, which was preparing me for grant writing. And I was thinking, and it's a 1-year commitment. So I was thinking if I didn't match, मैं probably ये program complete करूँगी, मैं एक funded grant लिखूँगी, and then probably my chances gonna be better, like really better, to go to a better place. तो मेरे पास एक थोड़ा सा बैकअप प्लान था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा बफर था. अदरवाइज obviously like not ranking program is something unusual. So मैंने अब डिस्कस किया नोमी से भी, अपने क्लास फेलोज जिनसे लिस्ट वगैरह, and they all said the same thing कि अगर तुम if you are okay living with the decision that you can go unmatched, you can, because 2 साल हो गए, you never know, like it's competitive, like ठीक है calls भी आ गई, इंटरव्यू भी अच्छे हो गए, but you never know, like अगर आपके अच्छे इंटरव्यूज भी हुए हैं तो आपको पता थोड़ी होता है कि आपको रैंक कर रहे हैं या नहीं कर रहे. तो anyways, मैंने रैंक ऑर्डर लिस्ट उस तरह सबमिट करवाई. Go ahead, Anum. So rank order list का time आया, I submitted my rank order list, ranking only 7 programs, thinking like really scared I might go unmatched. But at the same time, like you have to think about it, like whatever you're doing, like it has consequences. Like एक पहला ये कि मैंने separate रह के residency और training करनी है, will I be happy in the program? दूसरा कि I will वैसे भी तो unhappy दूर रह के भी तो एक challenge है आपका रहना. तो उसके ऊपर एक एडेड वो आप किसी ऐसे प्रोग्राम में चले जाओ जहाँ पे आपको इस तरह की बातें सुननी पड़ रही हो डेली बेसिस पे कि ओ यू आर वुमेन, यू आर नॉट गुड इनफ. लाइक देयर आर प्रोग्राम्स, देयर आर पीपल अराउंड. लेट मी शेयर लाइक वन एग्जांपल हियर. लाइक मैं कॉन्फ्रेंस में गई थी एंड आई वाज प्रेजेंटिंग, काफी और भी फ्रेंड्स ग्रुप्स थे उनके थ्रू, लाइक देयर वाज लाइक एन अटेंडिंग हु वाज जस्ट लाइक giving feedbacks and telling people like what to do, and he was from Pakistan. So honestly, like I was very nervous. I was asking him the same questions जो कि मैं सारे program director से पूछती हूँ कि क्या देखते हैं आप candidates में, क्या देख रहे हैं, किस तरह rank होते हैं, what should I do, I'm worried like maybe I won't match, इस तरह की चीजें. So out of nowhere, like he gave me this feedback, telling के मैं तो अभी बता सकता हूँ तुम्हें कि क्या मसला है, तुम्हें क्या मसला होने वाला है. And I was like, okay, what? Maybe he will tell me something productive, like about my CV. He told me I need to tone down. I need to, that I come up as a person who is very aggressive and who can suppress other people's personality. This is the first time I have heard anything like this. Like, मुझे पूरी जिंदगी, you know me, like yes, I am like talkative, I'm confident, but okay, will it gonna be affecting my like interview or like how? And clearly told me
इंटरव्यू में जब लोगों को देखते हैं इस तरह की पर्सनालिटीज जो हैं बिल्कुल पसंद नहीं की जाती एंड लिटरली लाइक आई वाज शैटर्ड लाइक आई वाज लाइक ओके नाउ ये एक एडिट चीज आ गई है लाइक व्हाट डू आई डू लाइक दिस इज हु आई एम लाइक दिस इज हु आई एम सो सारे लोग कहते हैं इंटरव्यूज में बी योरसेल्फ लाइक शो योर पर्सनालिटी बी कॉन्फिडेंट बी दिस पर्सन इज टेलिंग मी समथिंग टोटली ऑपोजिट but then I noticed a pattern, the way he was saying things about his female colleagues, like, oh, ये मेरे साथ काम करती थी, देखो हर साल एक बच्चा कर रही है क्योंकि इसको बड़ी जल्दी है फैमिली स्टार्ट करने की. This blew me off. Like, honestly, like, I felt, खैर थोड़ा सा उसने impression तो छोड़ा, मतलब मैं I was worried, like मैं अपनी दोस्तों से पूछूं, मैं अपने हस्बैंड से पूछूं यार क्या मसला है, वाकई तुमने कभी ये चीज नोट की है कि आई कम अप एज दिस पर्सन. मैं अपने पुराने कुछ एक दो अटेंडिंग से पूछा कि आपको कोई मतलब द वे आई एम एंड एवरीवन टोल्ड मी you know just be yourself, be confident, like don't change anything, like they don't have any issue. So it gave me an idea the way he was referring to all these people, like हाँ, और उसी में एक अपनी फीमेल कोलीग के मुतालिक के वो तो इतने प्रोसीजर नहीं करती, बस थोड़ा सा वो क्लिनिक करती है, बाद में ये करती, मतलब दिस वाज लाइक वेरी सेक्सिस्ट कमेंट्स जो मैंने देखे. So you will come across these people, you will work with these people, there will be fellows, even residents, so get ready, like. And I feel like now उस time पे मुझे ये चीज affect की, but now I know कि जिस field में मैं जा रही हूँ, I have to be first of all perform better than men. Like एक general perception है कि बंदी है आ गई है पता नहीं काम होना या नहीं. You have to perform better than them. That's what I feel. Like I feel for us it's hard. It's like an uphill climb. Otherwise you're not good enough. So it's not easy to go through all this. But I want you to all the people who are hearing all these things, that there are some constructive criticism and there are some criticism which are destructive, like which make you think like, is there something wrong with me? So this is something I want to share with you. Anyways, rank order list submit karai. Uske baad question ye tha ki who gonna vouch for me? Like will pehli baat to ye, will anyone will vouch for me, and who will be that person? So जिनके साथ यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में काम किया था उनको रीच आउट किया कि जिनके साथ मैंने फर्स्ट ऑथर मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिश किया और प्रोजेक्ट्स वगैरह किए कि विल यू बी कंफर्टेबल रीचिंग आउट टू दिस प्रोग्राम, जो कि मेरी टॉप चॉइस है, रीचिंग आउट टू दिस प्रोग्राम. और आई वाज रेडी, लाइक मे बी वो क्योंकि दे वर्क विद मी ऑन द रिसर्च प्रोजेक्ट, दे डोंट नो मी क्लिनिकली कि मैं कैसी हूँ एंड माय वर्क एथिक्स एंड ऑल दैट. सो एनीवेज सरप्राइजिंगली उन्होंने मुझे reply back kiya, अच्छा response diya. Now came the second person I reached out to was this program director at Cedars, who was my fellowship program director right now, जिसने मुझे पहले कहा था कि I need to know you more to write you a CV, write you a letter. उन्होंने मुझे मतलब सरप्राइजिंगली, मुझे था यार फिर ना इनकार हो जाए. पहले उन्होंने कहा कि लेटर जो है वो महीने बाद तुम्हें मैं क्या लिखूं. मैंने कहा अब भी 6-7 महीने हुए होंगे, 4-5-6 महीने हुए होंगे since I joined. तो मैंने कहा मांगू ना मांगू. एनीवेज मैंने उनको ईमेल की and surprisingly she gave me like very positive reply, like oh yeah I can definitely reach out and blah blah blah. Anyways, इन दो लोगों ने ईमेल की थी. University of Pittsburgh actually called my first 2 programs that I ranked वहाँ पे, और इन्होंने वो ईमेल भेजी थी उनको. They showed me the email actually later on. So I will tell you, it was very objective. Like everything you are doing will be there. Like no one will oversell things. But interestingly, they literally wrote like, I have worked with so many people, and she is X, Y, and Z. So these are the things which are considered good letter. This is what I wanted them to write. Like that's why मैंने उनसे पहले नहीं लिया था, letter नहीं लिया था. कि वो कहेंगे hardworking, punctual, excellent. No, I don't want that. So they really wrote a really good email that they sent to the programs that I ran. Pittsburgh वालों ने email की. I didn't see that emails. All my letters were waived, so मैंने नहीं देखे. एक letter पे मुझे बहुत ज़्यादा वो था कि पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा उसके अंदर, जो कि बाद में मैंने program coordinator से कहा मुझे जरा ना letter, क्योंकि उसने upload किया था and I was in like good friends with her. तो मैंने उसे कहा कि मुझे ना हॉस्पिटलिस्ट डायरेक्टर का जो लेटर है ना, क्योंकि दैट वाज द वन व्हिच वाज ईटिंग मी अप, बिकॉज आई नो मेरे प्रोग्राम डायरेक्टर जो है रेजिडेंसी के, वो उसने अच्छा लिखना है, बिकॉज आई नेवर हैड एनी इशू देयर.
ये 2 साल मुझे था कि पता नहीं क्या होगा उस लेटर में, उसमें वो चीजें होंगी भी जो कि मैंने इतनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स की हैं, अपने ऑफ टाइम में जा जाके काम किए हैं. तो इंटरेस्टिंगली शी शोड मी द लेटर एंड इट हैज एवरीथिंग. लाइक उसने ये चीजें मेंशन की थी कि हमारे डिपार्टमेंट के लिए ये कितनी हेल्पफुल है, इसने इन चीजों में काम किया, इसने ये चीजें. So this is what you need. Like honestly, if you show to go to work as a hospitalist waiting for 2 years, and there is a myth. Like I was told like before I started all this, कि हाँ बस green card मिल जाए fellowship match हो जाती है. No, like if you're going for a competitive fellowship, you need to have that recipe. Like otherwise, I have seen people जो कि ये path follow करते हैं, and then it's an uphill climb. Like अगर आप 2-3 सालों के बाद match नहीं होते, every year you need to be better version of yourself, which is harder. So I will say to all these people who are waiting, yes, visa does matter, and but everyone understands. Like interview में मुझे लोगों ने पूछा था directly, what was the reason that I didn't apply? Was I not sure that I'm going to do cardiology, or I had any personal issues? And I upfront told them I was on an H-1B visa and it was not conducive for me. Like my options were very limited, and they all understand. So be honest. That it was a visa issue, and everyone does understand that. But at the same time, मुझे इंटरव्यू में खासतौर पे मेरे जो पहले 3 प्रोग्राम्स जहाँ जिन्हें मैंने रैंक किया था, जहाँ पे मुझे अच्छा रिस्पांस भी आया था, उन्होंने सबने ये चीज मेंशन की थी कि हमारे पास लोग आते हैं आफ्टर वी सी अ लॉट ऑफ पीपल हु अप्लाई आफ्टर बीइंग अ हॉस्पिटलिस्ट. बट इंटरेस्टिंगली तुमने सीम्स लाइक कि तुमने काफी बीच में ये एकेडमिक काम रिसर्च तुम काफी प्रोडक्टिव रही हो 2 साल. मतलब ये स्पेसिफिकली लोगों ने मेंशन किया था, because a lot of people don't do that. These are their words. और ये मुझे एक नहीं 2-3 programs ने कहा था. So all the people who are waiting before they apply, I will tell them it's very easy to get distracted. Believe me, it's hard. Like there are times like जब के ऑफ टाइम में दिल ही नहीं चाह रहा होता था कोई काम करने का कि यार कुछ भी नहीं करना, आज आज घर बैठना है, आज ना कोई पढ़ाई की बातें ना कोई रिसर्च का काम. लेकिन you have to do it because आपकी completion deadlines हैं, आप नहीं करोगे it's gonna affect you directly. जिस बंदे का project है वो तो खैर कोई आपने नहीं complete किया तो वो कोई उसको कोई और मिल जाएगा, but it directly affects you. तो मेरा ये है कि do something, like make sure you are productive, be involved with the group. Like all these things will speak for itself. Like people will know okay, you can work and you have potential and you have interest. So anyways, rank order list bana di. As I said, like rank us tarah kiye in the order of my preferences rather than based on area. Or ready the mentally ke it gonna be we have to be a part for the training. This was also a decision जो कि आप इस तरह नहीं मतलब it wasn't easy. Like आप बैठ के एक दिन नहीं ये सोचते कि हाँ मैंने वहीं जाना है और मैं जा रही हूँ या मैं जा, and it works both ways. Like even I'm not talking about any specific gender. When you are a couple, you have mutual goals. And I guess I personally believe there is power in numbers. Like वो उर्दू में होता नहीं एक से भले दो. So I personally हाँ एक और एक क्या ना exactly. तो मेरी लाइफ में जितने भी डिसीजंस रहे हैं या जो भी मैंने किया है honestly उसके अंदर 100% my husband was always with me. And this was never forced. Like we worked around, like ये होगा challenge, हमने ये करना है, ये इस तरह होगा, हमने ये करना है. So we always worked as a team. So इस time पे भी he always he was with me and he is like या तुम्हारे पास अगर बेहतर program है, because again like I don't know what my path gonna be after this, but if you're thinking about any subspecialization, I didn't want to go to a place जहाँ पे फिर मेरी वही struggle है, uphill climb है, अब community में match हो जाओ and then it becomes really hard. Like फिर उसके बाद वो दोबारा process शुरू हो जाता है. I'm not saying it will be easy like being somewhere else, but yes, the struggle is different. So anyways, उसने मुझे support किया, we'll work it out. And anyways, when the match came, I matched to University of Texas San Antonio, which is again like far apart. Like it's not even like closer to Pennsylvania at all. So it's again like states away. So that's gonna be a challenge, I feel like, obviously, and it's not like something that I'm like oh so happy about it. I didn't know, like every time like something happened, I don't know how to express my emotions, like खुश हूँ, ना हूँ,
it's a mixed emotions for me, or every time it's a mixed emotion. Like non-accredited mili, achhi jagah mili, yes, great, but then it came with a price. Ab match hui, achhi jagah hui, it's a great program, people are awesome, but then again, I paid the price. So whatever you do, you always pay its price. That's what I feel. Sometimes, like again, like you will go back and think, like in the end, is it all like worth it? Like all your journey, whatever you did, ye sari khajal khawari aur jo bhi hai. So I will say, so I'm not afraid of failing. I'm afraid of living with regrets. Like for example, if I want to do something, like I have an idea, maine fellowship karni hai, and I tried it, I failed like 2 times, 3 times, whatever, and I gave up. That's totally fine with me. Like I was fine with it, like trying and failing, but never trying and 10 years from now thinking like बैठ के सोच रहे हैं अच्छा हम भी कर लेते हमें क्या था मतलब this is something which I can't live with. So I feel like if this is who you are, like you cannot live with the regret, then it's always worth trying, like what you aim for, and always aim and reach for the highest. Like I feel always have highest standard, high goals. Like people will tell you this is wishful thinking, दिमाग खराब है, ऐसे नहीं होता. But I personally feel in that process of reaching that goal, at least you will come up to something. अगर आप पहले ही नहीं सोच रहे, पहले ही छोटा सोच रहे तो you won't get anywhere. So it's okay to dream big. Like it's okay, but there is a difference, like dreaming and actually doing stuff. So you need to know, like whatever you are thinking or whatever you are aiming for, uske andar what commitments or what hurdles you have to overcome. And life will not be perfect. You won't get everything. So that's what I like. I know ठीक है fellowship मिल गई जो चाहते थे हो गया, but then during that journey a lot of decisions we took, like a lot of things didn't happen the way we wanted it to be. So initially जब प्लान किया था तो यही था कि यार हाँ ग्रीन कार्ड है, ऐसी कोई जगहों से कॉल्स आ जाएंगी, मे बी we will have a couple of programs जो कि similar हो, will rank it, but it didn't happen. So keep it in mind, like you will come across these situations just पे you won't have any control, and then you just have to sit with your spouse and just discuss what's the next step. And honestly I also feel like in all this, never even like one time like I thought about it, if my husband is not comfortable with it, I'm really gonna just like लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं कि जा रहे हैं नहीं मैंने तो जरूरी ये करना है. I wasn't like this, honestly I wasn't like this, because the thing is eventually this is a part of your life. So profession is a part of your life, and then you have this like whole personal life. आपने घर वापस आना, you have other goals, like आप फिर रहे हो आपके, there are other plans you have. So for me मैंने पहले से decided थी कि I'm applying with my full force. If I match, great. If I don't match, I will apply second time with that clinical scholars and grant and everything. And that's all I could do. That's all. Like मेरी इसके बाद मुझे लगता था कि I haven't like मैंने सारी जो रेसिपी में चीजें थी पूरी कर ली हैं. I don't think so उसमें मैं कोई और चीज ऐड कर सकती हूँ या अपनी कोई बहुत ही कारनामा करूँ कि तीसरे साल में मैं. And to be honest, at that time it wasn't worth for me. Like I wasn't like कि सारी जिंदगी मैं लगी रहूंगी and I really want to be a cardiologist वरना तो जिंदगी खत्म है. It wasn't like this for me. I was happy. Like I was like 2 साल बाद मैच नहीं होंगे ना तो ठीक है हॉस्पिटलाइज कर लेंगे क्या बुरा है. मतलब I was very flexible with it. So you have to decide, because the thing is it's very easy to get caught into that vicious cycle. Like अच्छा इस साल नहीं हुआ ना अगले साल मैं चलो clinical scholars कर लूंगा, उस साल भी नहीं हुआ तो मैं अगले साल एक और non accredited कर लूंगा. Maybe it works for some people. I'm not saying it's the wrong thing to do. Like everyone is different. If someone is that passionate or really, honestly it is not even about passion. I feel you have to live your life. Like for me it's a big part of my life. Like आपकी और भी तो काम है ना जिंदगी में, और भी दुख हैं fellowship के सिवा. तो मतलब मेरे ख्याल से कि for me it was give your best. If you fail, try another time. If you fail, okay, you have done your job. Like you don't have to be miserable like all your life achieving something which you already gave your best shot. So first of all, like summing up everything, I will tell
people who are in the same boat, like जो के residency के बाद 2 साल जिन्होंने wait किया, कि make sure you are productive, make sure, or especially those who are couple, especially those who are women, especially make sure that you are on board with every decision that you are taking with your spouse. The thing is, because you get a lot of support in that way. Like I feel like since he was with me in every decision, he supported everything. Like because when you have a partner who is also taking responsibility of that shared responsibility, then they will do things to help make your life more comfortable. Otherwise it becomes harder, it becomes more harder. And again, I will say there is power in numbers, so always work as a team. Try your best, give your best shot, see what works for you. And honestly, one more thing, work with the people like who have a say. So when I reached out to people, I did not reach out to everyone in the University of Pittsburgh. Like I literally targeted those people who were like nationally known, like who has published a lot in journals. People know them, they're well connected. Here in Cedars, my program director is nationally known. She is known for women heart disease, microvascular ischemia. So the reason is, जब आपका letter of recommendation जा रहा है ना, तो letter writer कौन है, that matters a lot too. So you have to work hard, but you have to work smart. So that's what I will say. Rather than, because I was thinking, there were some people जिनके साथ लोग research करते हैं काफी लंबे time के लिए, but they don't prove that helpful, या वो mentor नहीं करते. तीसरी बात ये मैं कहूंगी कि finding a mentor, and who is a mentor? Like मुझे तो शुरू में पता नहीं था ये mentor क्या है, इनका काम क्या होता है, इनको ढूंढना कैसे है, मतलब do you directly ask them? So what I identified, like वो लोग जो कि really are invested in your growth, like जो कि आपको सिर्फ काम के लिए यूज नहीं कर रहे कि अच्छा मेरे पेपर छाप रहे हो या रिसर्च कर रहे हो, who are really asking you, अच्छा तो तुम्हारा next plan क्या है, where you see yourself, and who are guiding you, telling you a little bit about the match process, how to be a competitive candidate. मुझे लगा था कि अच्छा इनको मैं reach out कर सकती हूँ, and can directly ask them, can you mentor me? And I did, and they were very happy, because there are some people who take pride in building you, and later on they can say, oh, this person is at this spot because I trained her or I trained him. Those are mentors. So ये मुझे पहले चीज नहीं पता थी कि हर बंदा mentor होता है और उनका काम क्या होता है. Because these are the people who actually reached out for me. These are the people who wrote my letters, and they made sure कि मैं match हूँ, मतलब honestly. So ये basically journey था. Sarah, summing up everything. If I missed anything, just feel free to ask. Thanks a lot. Thank you very much. It was a very elaborate description, and I really appreciate you describing everything so thoroughly. तो मुझे ये बताओ कि what अभी क्या कर रही हो? अच्छा, अभी मैं I am a clinical fellow at Cedars-Sinai Medical Center, at Women's Heart Center. It's basically it's an outpatient clinic and also research. So it's 50% research, 50% clinical. Some days we have clinic, other days we have research responsibilities. We do a lot of like coronary reactivity testing. They're studying like pathways to heart failure with preserved ejection fraction, because we don't know like exactly what causes it, or is there anything we can do to prevent it. So that's what they're studying. They're also studying which medications can help to treat and prevent risk of cardiac death in patients with microvascular ischemia, with open artery ischemia kind of. So it's like kind of like novel new thing. Very nice. तो मुझे ये बताओ कि कार्डियोलॉजी की फेलोशिप कब शुरू हो रही है? जुलाई में. जुलाई 2021 को. अच्छा ठीक है. अब you had मतलब thank God you described everything so thoroughly, लेकिन I still had some questions, the gaps I want to fill. मुझे ये बताओ observerships कितने अरसे की थी before residency? Before residency 4 months. 4 months. पहले महीने की किसी कांटेक्ट था आपका, उसके थ्रू आपको मिली थी दोनों को, and then you were able to extend it. How did you get it? Or like if you have to guide someone जो भी सुन रहा है कि observership हम कैसे ले सकते हैं? पहले महीने की जो थी, my husband was basically exploring if surgery is a best fit for him or not. So उसको एक मुझे याद आ गया.
मेरे से काफी when you talk to him away from it. Like, मैंने ऐसे समझाया, मैंने कहा यार कर क्या रहा, मुझे याद आ गया बड़ी लंबी, मुझे इसलिए याद है क्योंकि I was driving at that time और मुझे से बड़ा डराया था यार, लेकिन I'm glad I did that. I am thankful to you that you did that. अच्छा मुझे याद आ गया, हाँ, because वो मुझे, मैंने कहा यार क्या कर रहा है अपनी, you know me and Numan used to be close in medical school, तो हमारी गपशप होती थी, मैंने कहा कर क्या रहा है यार अपनी लाइफ के साथ, मतलब करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन you know your life is miserable. Yeah, at least during training. And also you knew him, like उससे मतलब वो भी मेरी तरह ही है कि लाइफ में चिल भी चलता रहे, काम भी चलता रहे. Anyways, तो उनके उसके थ्रू जब वो वहाँ पे उसने रोटेशन की, तो he asked for me कि मेरी वाइफ भी है और उसने इंटरनल मेडिसिन अप्लाई करनी है, if you know someone. So he basically connected me with someone, or both of us to someone, because us ek rotation ke baad he was sure like he can't, like the lifestyle was so tough, like literally he used to go like 4:30 in the morning, he was coming back at 8:30, like yeah, मैंने एक साल काम किया ऐसे बैक सर्जरी के साथ, छोटी बच्ची के साथ, बड़ा मुश्किल है ये करना. So anyways, वहां से हमें फर्स्ट जो है ऑब्जर्वरशिप मिली, उनके साथ काम किया, उनसे आगे पूछा कि अभी हमें एक और महीने की चाहिए, इफ यू नो समवन. उन्होंने तो लिटरली लाइक एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी, दैट्स हाउ वी गॉट इट. सो इनिशियली जो पहली स्टार्ट हुई थी वो इसने पाकिस्तान से, जिस तरह वी रीच्ड आउट टू कपल ऑफ पीपल, और उसमें नुमान को इन्होंने बुला लिया, तो आई जस्ट वेंट देयर, तो इस तरह स्टार्ट हुई थी. सही है. अच्छा, दूसरा मुझे ये बताओ कि which residency program did you do your residency from? नाम क्या था प्रोग्राम का? Yeah, St. Agnes Hospital, Baltimore. ठीक है, तो you and Numan were in the same program? We were in the same program. ठीक है. अच्छा, दूसरी एक और बात ना, I want to take this moment. I'm so glad we are doing this interview, and I'm so glad that you mentioned everything that you did. So let me take a moment here and emphasize the importance of research before residency. बहुत से जूनियर्स को मैं गाइड करता हूँ कि देखो, आप अगर रेजिडेंसी से पहले रिसर्च कर लोगे ना, तो उसका फायदा खाली रेजिडेंसी में नहीं होता, उसका फायदा आपको बहुत अच्छी फेलोशिप बाद में मिलती है. अब मेरे भाई का मैंने अली का इंटरव्यू किया था, उसने हॉपकिंस में और यूपेन में रिसर्च की थी. एज अ स्टूडेंट ही वाज एबल टू गेट 3 पेपर्स पब्लिश्ड एज अ फर्स्ट ऑथर. ठीक है, उसे रेजिडेंसी बहुत अच्छी जगह मिली, और उसके बाद उसका दिमाग घूम गया, उसने कहा मैंने फेलोशिप नहीं करनी, तो he didn't even apply. अब वो 3 साल से हॉस्पिटल. That's totally fine. That is totally fine. Because as I said, like for me, living life, like you have to find a fit. Like mob mentality is never something that attracted me. Like लोग ये कर रहे हैं तो मैंने भी ये करना है, उसने ये कर लिया, उसकी देखी मैंने भी ये करना है. Never. So always find what works for you. Like honestly. बिल्कुल. तो हाँ, मतलब आई वांट ऐड के देखो, अगर आपके लिए कि अगर आप रेजिडेंसी से पहले रिसर्च करते हो फुल टाइम, यू नो, तो वो एक थोड़ा इजी होता है, रिस्पांसिबिलिटीज कम होती हैं, फैमिली नहीं होती, और सिंगल, और इतनी लाइफ में जरूरियात नहीं होती, तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका फायदा कल को आपको फेलोशिप में भी होता है. तो व्हाट स्पेसिफिकली इन अनम्स केस, आई थिंक द इशू वाज कि उसकी रेजिडेंसी से पहले कोई रिसर्च नहीं थी, रेजिडेंसी में भी बहुत कोई एक्सटेंसिव किस्म की रिसर्च नहीं थी, तो शी हैड टू मेक अप फॉर इट, क्योंकि कम्युनिटी हॉस्पिटल से रेजिडेंसी की, ठीक है, फायदा, आई थिंक इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. इफ यू हैड आस्क्ड माय ओपिनियन, आई वुड हैव टोल्ड यू कि ठीक है, एक H1 प्रोग्राम जो कम्युनिटी प्रोग्राम है, दैट इज वे बेटर देन अ J1 यूनिवर्सिटी प्रोग्राम. ठीक है ना? I still feel the same. I still feel but then you have to be a little bit smart here. Like you don't want to waste that time. Like जो timeline है ना, जो आप वेट कर रहे हो ग्रीन कार्ड के लिए, वो बहुत क्रिटिकल है. अगर आप ये कर रहे हो तो उसमें अगर आप प्रोडक्टिव हो, कोई काम कर लो. एंड आई एग्री विद यू कि आपको रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं होता, तो जब भी आप किसी के पास प्रोजेक्ट लाते हो एंड दे आस्क यू टू स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन, लाइक हाउ कैन यू डू इट इफ यू नेवर हैव डन रिसर्च. Exactly. So anyways, like yeah, that matters. अगर आपको मिलती है रेजिडेंसी से पहले, well and good, क्योंकि हम दोनों we were married, like research आपको पता है मिलना मुश्किल, financials के साथ जो ties होती हैं, that's harder to live like as a couple. So we never attempted that too, but yeah, you are right. Like it will help. Like if you have an option, go for it. हाँ, मैं honestly अपना बताऊं, मैंने I did 2.5 years of research at Stanford University. You know, पता है मेरी research किस चीज पे थी? It's very relevant to you. Cardiac MRI 4D flow. Oh really?
Oh, nice. Actually, I like cardiac MRI. All these advanced imaging, I'm not sure if I will end up doing like another fellowship, but I don't know. But it's सही है. interesting. तो मतलब 4D फ्लो का देयर वाज अ टाइम कि आई वाज द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड जिसने सबसे ज्यादा 4D फ्लो की प्रोसेसिंग की थी. Oh, तो बाकी wow. लोग 5-10 केसेस करते थे, तो आई हैड प्रोसेस्ड मोर देन 150 केसेस एट दैट टाइम. तो खैर मेरी रिसर्च सारी उस पे थी. तो आई थॉट व्हाट रियली हेल्प्ड मी वाज कि जब मैं प्रोग्राम में आया, रेजिडेंट्स तो छोड़ो, अटेंडिंग्स को रिसर्च नहीं उतनी आती थी जितनी मुझे आती थी. तो एवरीबडी वांटेड माय ओपिनियन कि रिसर्च कैसे करनी है, क्या करना है. तो दैट इज वेयर आई थिंक रिसर्च बिफोर रेजिडेंसी रियली हेल्प्स यू परफॉर्म बेटर, get a good residency, perform better during residency, and get Oh, a very good fellowship wherever you want. और उसके बाद even as an attendee, it goes a long way. ये skills है ना, आप research no, करना भी yeah. एक skill है. If you acquire that skill Early on. after early on, तो you have 5 to 10 years during your training to refine those skills and excel in it, as compared to if you start acquiring them later. And अच्छा, especially if you're thinking about competitive fellowship, to be honest, then you need to invest in that skill early on. अगर आप श्योर हो, मैंने तो डिसाइड ही रेजिडेंसी में किया था ना, कर क्या नहीं है. Agree. और इधर मैं एक और बात करना चाहूंगा, the importance of incomplete research projects. That's very important that you mentioned कि जहां भी अगर आप जाते हो ना, अगर एक अच्छा एकेडमिक प्रोग्राम है, उनके पास लंबी लिस्ट होती है 10-20 इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स की, लेकिन वो आपको नहीं देते. वो इसलिए नहीं देते क्योंकि जैसे अनम ने कहा देखो ना, मेक श्योर ये ऐसा बंदा तो नहीं है एक इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट को लेके इनकम्प्लीट छोड़ देगा. इनकम्प्लीट छोड़ेगा, एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू. तो वो फिर आपको ये जो होता है ना कि अपने प्रोजेक्ट्स लाओ और ये सब कुछ, वो यही देखने के लिए होता है कि how good of a person you are you a self starter, are you a hard working person, are you a slacker. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जितने भी इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स आपको मिले, आप उनको जितना कंप्लीट करोगे आपको और ज्यादा मिलेंगे. और मिले, एग्जैक्टली. और इट्स ओके, लाइक मैं लोगों को यही कहती हूँ, अगर किसी ने ये कह भी दिया कि ओ कम अप विद एन आइडिया, जो भी आइडियाज इनमें आ रहा है ना, डू अ बैकग्राउंड सर्च, राइट समथिंग डाउन, email them, like submit them, discuss with them, और तुम्हें प्रोजेक्ट मिल जाएगा. बेसिकली दे आर टेस्टिंग यू कि तुम खुद क्या कर सकते हो, rather than serving you something in a plate. Exactly. और अब एक और, there were a lot of good things that I wanted to interrupt and jump in, but I didn't want to really interrupt. So I will add. Okay, I'm so glad again you're mentioning the जो female challenges हैं. Females के लिए ना, मतलब जिस तरह मैंने पहले कहा था, उन्हें जज बहुत किया जाता है. There are things are really tough for females because या तो उनको equal ground नहीं मिलता, ठीक है, या उनको कहा जाता है कि यू आर एंटाइटल्ड, आपको तो मिल जाएगी भाई कार्डियोलॉजी बिकॉज यू फीमेल. हाँ, या दूसरी तरफ ये होता है कि तुम तो भाई लड़की हो, तुमने कहाँ मेहनत करनी है, तो उसको रखने का फायदा नहीं. देयर आर ऑलवेज एक्सट्रीम्स, दरमियान में ऑब्जेक्टिवली जज ही नहीं करते. I had it all, like मैंने आपसे शेयर किए एग्जांपल्स, क्या-क्या चीजें I noticed, I heard, and definitely and honestly, like people don't know like what's your journey. Like when I started, like honestly, when you asked me to do this interview, initially I didn't even want to talk about it. I was like, ठीक है, लोग सोचते हैं ना प्लेट में रख के मिल गई, या सोचते हैं मेरा क्या जा रहा है. But honestly, I do feel like it's important that we address this issue, and a lot of insensitivity towards people, like जो हम लोग कह देते हैं किसी को, a lot of people actually congratulated me, men, like a lot of men congratulated me in that way. अच्छा, वो बंदियों का तो आजकल चल रहा है ना कार्डियोलॉजी में, वो वुमेन इन, वो तो आपको वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट और ये वो. And I just didn't say anything. I was like, okay, thank you for congratulating me, that's fine. But they don't know like कि मैंने कितनी खचखबारी भी काटी है. This is like what I'm telling you now. हाँ नहीं, लेकिन ना देखो, ये इन जनरल है, एंड दैट इज द होल पॉइंट ऑफ डूइंग दिस रेजिलियंस सीरीज के जो लोग कुछ बन गए हैं ना, आज कहीं पहुंच गए हैं, वो सबको जब बताते हैं ना कि भाई हम किन किन चीजों से होके गुजरे, तो अदर लोगों के तो कान खड़े हो जाते हैं. वो कहते हैं प्रोबेबली इट्स नॉट इवन वर्थ इट इतनी मेहनत करना, यू नो. तो हर कोई ये जो बंदा उधर पहुंचा है, वो नहीं है जिसकी किस्मत अच्छी थी, वो है जो बार बार गिरा और फिर भी उठा. ठीक है ना. और दूसरा, आई एम सो ग्लैड यू मेंशन्ड दैट फीमेल चैलेंजेस के जो हैं, आई कंप्लीटली एग्री. और दूसरी एक और बात, जो टफ स्पेशलिटीज हैं, कंपेटिटिव स्पेशलिटीज हैं, उनमें मुझे भी बहुत सुनना पड़ा था. इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी वाज द मोस्ट कंपेटिटिव स्पेशलिटी टू गेट इनटू इन द एंटायर कंट्री. न्यूरोसर्जरी से ज्यादा, डर्मेटोलॉजी से ज्यादा. ओ बस उमर के पास ग्रीन कार्ड था ना, तो उससे मिल गया भाई. ग्रीन कार्ड की बेसिस पे कितने लोगों को आज तक आईआर मिली है. Exactly, that's true. Right? Like that's what I heard. Green card था, बंदी थी, तुम्हारी लाइफ सेट है. Exactly. इतने ग्रीन कार्ड होल्डर्स बेचारे अनमैच्ड बैठे हैं, इतनी लड़कियां अनमैच्ड बैठी हैं. You know, तो लोग, people will always come up with excuses to satisfy their own inner deficiencies, right? तो उसको, I'm so glad we are doing this. और आखिरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, and I've said this in the
प्रायर इंटरव्यूअर्स एज वेल कि जिन लोगों को मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ ना, देखो हम लोग दोस्त हैं सारे, राइट? अनु मेरे घर आई थी, उसने हमें पिज्जा खिलाया था। मैंने क्या बनाया था वैसे? आपने हमें क्या खिलाया था? टिक्के बना के खिलाए थे। टिक्के और बनाए थे, हाँ, मेरे बाद में फेवरेट। मैंने आपकी रेसिपी भी ट्राई की थी। हाँ एग्जैक्टली तो वो बिल्कुल, तो मतलब वी आर लाइक फ्रेंड्स, राइट? हम लोग लेकिन हम लोग एक दूसरे से ये बातें नहीं करते नहीं कि कर आप अपनी लाइफ में कितने correct. मिजरेबल हुए हो, कितनी प्रोफेशनल आप मुश्किलात से गुजरे और कहाँ पहुंचे हो। वी डोंट टॉक अबाउट दिस। तो मुझे खुद नहीं पता होता इन बातों का। उमर मेरे भाई को लिए लगता ही नहीं था कि मैं पढ़ती नहीं हूँ। हाँ, मुझे अभी भी नहीं लगता। अभी मतलब नहीं मैं जब लगता देखो फेसबुक पे नौमान और अनम जो हैं वो कर रहे कहीं हैं। कभी एरिजोना आ गए हुए, कभी कुछ गए। मैंने कहा यार ये तो लाइफ में इतना एंजॉय कर रहे हैं, हम पूरी जिंदगी में नहीं इतना एंजॉय करते जितना एक महीने की सैलरी कर लेते हैं। या उसके लिए what work like we were able to do that. आप you have to be on a fixed schedule. Like honestly आपको वो नहीं पता कि हम फिर तो गए हैं, फिर के तो आ गए हैं, उसके बाद अगले हफ्ते कहीं नहीं जाना, अगले हफ्ते फिर हमारा होता था next week. So we were compensating and we were on a नहीं, fixed लेकिन उसकी भी schedule. पिक्चर्स लगाया करो ना फेसबुक पे, सबको है पता ना? लगे। वो खैर है, वो खैर है, ऐसे ही चलता रहे। नहीं पर भाई ग्रीन कार्ड था, बंदी हूँ, मिल गई। तो I'm आई एम cool सो with it. ग्लैड कि मतलब हाँ वाकई में यार देखो ये तो दोनों हर वक्त सैरे कर रहे हैं और माशाल्लाह फिर भी दोनों को मैच मिल गया। लेकिन सी दैट इज द होल पॉइंट कि जो बंदा लाइफ में कहीं पहुंचता है वो सबको नजर आता है, जो वो मार खाता है Yeah, वो नजर नहीं आती, वो जो नहीं एंजॉय नजर करता है वो नजर आता वो नजर है, राइट? एंड दैट इज द होल पॉइंट ऑफ डूइंग दिस रेजिलियंस सीरीज कि हम लोग अपनी लाइफ की सक्सेसेस नहीं शेयर कर रहे, हम स्ट्रगल्स और फेलियर्स शेयर कर रहे हैं कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं ना तो कैसे पहुंचे, कितनी मार खा के पहुंचे हैं। That's true. Yeah. Yeah. It was a journey. And during that time, like there were a lot of times where I doubted myself. जहाँ पे मुझे, I was, I was feeling low, overthinking, match होगा, नहीं होगा, क्या होगा उसके बाद, मतलब you start thinking like 5 years ahead, like ये नहीं होगा तो फिर मैं क्या करूँगी? Like all the negative thoughts keeps coming to you. So it happened to me too, but I honestly, I feel like Noman was my big support. He was always my cheerleader. He was always there. You can do it. Don't doubt yourself. सारे लोग कर रहे हैं, तुम्हें क्या है? मतलब he was always there supporting me. So that's why I always say like trust your partner, like have them on board with whatever you are doing. You know, नुमान का भी इंटरव्यू करना पड़ेगा, एक मिसाली शोहर, you know, ideal husband. Masali shahar. He is a masali shahar. Yeah. माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा देखो, तो मुझे ये बताओ, you graduated in 2011, right? Mm-hmm. 2021 हो गया। Now you Mm-hmm. will start your fellowship in 2021. Mm-hmm. 2024 में ग्रेजुएट करोगी कार्डियोलॉजी फेलोशिप से, और उसके बाद हो सकता है कार्डिक इमेजिंग की या ईपी की या इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी की भी 1 साल की फेलोशिप पकड़ो। तो यू माइट ग्रेजुएट इन 2025 या वहीं पे रुक जाओ, इट्स अप टू यू, मतलब नोबडी इज जजिंग एनीवन। लुकिंग बैक, डू यू थिंक इट वाज ऑल वर्थ इट? Looking back, I feel like I had a goal in mind and I wanted to give my best shot. I got it. I don't regret anything that I did. It's a journey. I grew so much during that time. I learned so much, a lot of things, which I feel like I can even pass it on, like tell people like do's and don'ts. For me, as I said before, like living with regrets is what I never wanted. I can live with the failure. Like I tried, I failed, I didn't get it, but I tried. I tried my best. But never attempting something like I can't live with it. It's just me. Like I won't be comfortable with this idea. हाँ अगर मैं होती मेरा माइंड इस तरह होता कि यार करनी या नहीं करनी, बिकॉज आई टुक, मुझे पता था कि मैंने रेजिडेंसी में अप्लाई नहीं करना सेकेंड ईयर में, तो आई टुक 2 years डिसाइडिंग कि मैंने वाकई ही ये करनी है या नहीं. आई डिड रोटेशंस कार्डियोलॉजी में, कैथ लैब रोटेशन, सारी रोटेशंस करके देखी, और I really, by the time like I graduate, I was sure I'm going to do it. So it wasn't मेरे लिए वो ये नहीं था कि हाँ करनी है बस just because I want to do a fellowship. It wasn't like, for me it wasn't like this. So looking back, yes, challenges थे. अब वो क्या कर सकते हैं, आप international graduate हो, आपकी वैसे ही uphill climb है, और old graduate वैसे ही steep climb है. So I don't think so. I regret anything. Good. तो मुझे ये बताओ, looking back in the past 10 years, what do you think was one thing that helped you the most in your journey? And I kind of know what your answer is going to be. अच्छा चलिए आप बता दें। नहीं आप बताओ, फिर मैं बताता हूँ। What one thing that really helped? I guess being on track, very organized, making sure that I'm following the path that is laid in front of me, being persistent. Support of the family was very important. My mentors, they really helped me. It's like a combination of things, honestly. It's not like one thing, like
pinpoint, or maybe like my craziness to just keep going, like maybe that's is one thing. So जितने भी पिछले इंटरव्यू रहे ना, तो उसमें मैं यही कहता हूँ कि सबका यही होता है, 3 P's in 1 hour: पेशेंस, परसिवरेंस, persistence, और फिर R, resilience. लेकिन आपके केस में मुझे लग रहा था you will say Numan, वही मिसाली शोहर, you know. No, he is definitely. No, there is no question. Like honestly, like I will tell you one thing. Like he is always even like when I told my dad that I'm gonna apply for fellowship, and even he was not too excited about it. Like, oh, kya ho gaya tumhe? Bas kar do padna, ye wo. But he was the one who always believed me. So if it wasn't for him, like, yes, I won't be able to do it. So I will agree with you. Yeah. सही. अच्छा, तो मुझे ये बताओ, what hindered you the most? If there was anything जिससे आप कहो कि इससे मेरी थोड़ी मुश्किल हुई पूरे जर्नी में 10 साल के, what would that thing be? No research experience to begin with. Being from a graduate of a community program, that was a big hindrance. You have to overcome all these things. Like when you, what I will say to people, like when you apply. So I said names matter. So honestly, what happens in these 2 years, every interview, everyone was like literally saying like, oh, you are from University of Pittsburgh. So it washed away like a little bit of name that was associated. So it really helps. So I will say like people who are waiting, it's preferably go to a centers which have their name, like it will help you. So it was a big hindrance having no research experience, and the programs was not very well known. सही. तो मुझे ये बताओ, which campus were you in? UPMC Presbyterian? Yeah, main Presbyterian. Yeah, main one. सही. अच्छा, तो अब just to quickly summarize कि after graduation you did a house job, medicine में और surgery भी की थी? हाँ, medicine surgery complete की, medicine surgery और medicine allied, surgical allied, 1 year. ठीक है. तो मेडिसिन सर्जरी में हाउस जॉब की, उसके बाद स्टेप 1 दिया, फिर शादी की, फिर उसके बाद अमेरिका आके ऑब्जर्वरशिप्स की, फिर उसके बाद CS और CKS शादी के बाद इकट्ठे दिया, फिर you did your residency at St. Agnes with Numan इकट्ठे. You didn't do couple match, you applied together, लेकिन आप लोगों ने रैंक ऑर्डर लिस्ट अपनी इकट्ठी सबमिट कराई. फिर मैच हुआ, मैच होने के बाद you got your residency in a community program on H1 visa. So you worked at University of Pittsburgh, UPMC Presbyterian में as a hospitalist. They sponsored you green card. 1.5 साल बाद वो आ गया. And that you did a cardiac imaging fellowship at Cedar, right? No, women's heart fellowship at Cedar. Women's heart, ठीक है. Women's cardiovascular health. ठीक है. तो वो 1 साल की थी, right? Yeah, 1 साल की. So is that the fellowship that's ending, या ये दूसरा आपका program है जो अभी कर रही है? नहीं, this is the fellowship that is ending. So इसके basically parts हैं. Like they have 3 fellows. One is responsible for reactivity testing. The overlap, a lot of overlap between the two. One is responsible for MRI, I'm the MRI, and one is basically just like one senior fellow who is overlooking all these things. That senior fellow is mostly a cardiologist. So we have one cardiologist with us. ठीक है. तो मुझे ये बताओ, वो जो टाइम पीरियड था जब स्टेप 1 करके शादी करके you and Numan came here, तो उस टाइम पीरियड में खास तौर पे और स्टेप्स की फीस देना, ये सब कुछ, did you guys have any financial limitations? क्योंकि कमा तो दोनों नहीं रहे थे. How did you guys survive it? Yeah, so the thing is like fortunately we both didn't have like a lot of financial issues. Like our parents supported us a lot. शादी से पहले Numan also, मतलब at the same time he was also doing a job, so हमने थोड़ी सी उससे भी saving की. I didn't do any job at that time, so वो थोड़ी काम आई. दूसरा parents की support, monthly they were sending us allowance. So both Numan parents, my parents, उन्हें बच्चे पढ़ाने का बहुत शौक है, वो दोनों के parents को कि अच्छा पढ़ रहे हैं तो ये. So anyways, they really supported us. So अल्लाह का शुक्र है उसमें हमें financially कोई इतना मसला नहीं हुआ. But yes, like we used to be very cautious the amount that we were spending. So it wasn't like गए और पीछे से पैसे आ रहे हैं और उड़ा दिए, shoppings हो रही हैं. It was really to pay our expenses, like basic rent, खाना पीना, इस तरह की चीजें. तो महीने का कितना खर्चा कर लेते थे आप लोग और कितना लेते थे घर से? I will say anywhere from, it was a lot. I will say मतलब a lot, like I don't know like how you look at it initially, 1,500 to 2,000 I will say. दोनों का आपका होता था खर्चा? Total. अच्छा, टोटल. हाँ, दोनों का मतलब वो है ना, तो हजार roughly या 750 yeah, roughly 1,000 उसके अंदर per person हो जाता था. It was not that bad. तो उसमें आपने rent देना और exams की fees parents ने दी.
तो बस कभी कभी ये होता था कि यार as soon as possible मैच हो जाए, अनमैच ना चले जाएं, because even if your parents are financially stable, you do feel like you are a Our financial responsibility. burden, Yeah, right? Yeah. yeah, exactly, you are a responsibility. तो आपको ये नहीं होता कि मैं मैच ना भी हुआ तो मैं बैठा याशी करता रहूंगा, मतलब इस तरह की थॉट्स नहीं आती आपको, मतलब you are feeling actually bad कि यार क्या पिछले 2 सालों से बैठे एग्जाम्स की वो फीस ही दे रहे हैं वो लोग. So these thoughts cross your mind, but at the same time, like fortunately, दोनों के parents were always there to help us. सही. तो मुझे एक बात बताओ, अगर कोई ऐसा बच्चा सुन रहा है जो पहले कभी अमेरिका नहीं आया या अमेरिकन कल्चर में नहीं रहा और their communication skills are not the best, they're concerned about English, what is your take on that? What do you think कि कितना टाइम लगता है इनके अमेरिकन एक्सेंट को लिसनिंग के लिहाज से एडजस्ट होते होते and to be get more comfortable and to develop good communication skills so that you are confident when you're talking and not nervous and thinking about कि भाई मैं कुछ सही बोल रहा हूँ कि नहीं. टाइम इनिशियली जब कोई भी आता है, इवन इफ वी नो इंग्लिश, हमने पढ़ा है इंग्लिश में, वो इतनी फ्लुएंट इंग्लिश तो कोई भी नहीं बोलता ना. एनीवेज मुझे थोड़ा थोड़ा होता था एक्सेंट समझने में, खासतौर पे मैंने बाल्टीमोर से ट्रेनिंग की है, तो प्रीडोमिनेंटली अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन थी, थोड़ा सा डिफरेंट एक्सेंट, मतलब वो समझने में थोड़ा आपको टाइम लगता है. But I will say within few months you will be okay. Like that's fine. And accent doesn't matter. Like जब आप काम करते हो यहाँ पे, आप देखो people are from all around the world. Everyone have different accents. Like as long as आपकी English समझ आ रही है, आप communicate कर सकते हो, I don't think so people even like hear about it. An accent is something I don't think so it's easy to get rid of, not easy. But yeah, your fluency in English and your ability to like listen and comprehend what other people are saying, it will take you a couple of months, but it's not that hard. What was harder for me is like honestly small talks. Like हम वैसे तो like I'm very talkative and all that, but यहाँ गोरों के साथ बातें, उनके टॉपिक्स ही और होते हैं. आज फुटबॉल का मैच देखा है, oh my god, stay safe, it's raining. Like there are some things like cultural things which you need to be like which you need to blend into. Like they are very polite, like oh it's raining outside, stay safe, stay safe. I was like oh ये कभी किसी को नहीं कहा कि बारिश हो रही है तो जिंदगी का खतरा हो सकता है. मतलब I agree. You know what was my small talk? It's funny. वो खानों पे होती थी. हाँ, खाने कल्चर फुटबॉल, तो यू हैव टू डू इट. मुझे थोड़ी सी हेजिटेंसी थी शुरू में, जब पेशेंट्स क्लिनिक में आ रहे हैं, वो बातें किए जा रहे हैं, वो पूछ रहे हैं आपसे, तो मुझे थोड़ी सी उस पे हेजिटेंसी होती थी, बट आई ओवरकम दैट. लाइक आई ओवरकेम दैट. अब मुझे कर लेते हैं स्मॉल टॉक थोड़ी बहुत. और दूसरा, nobody's judging you on your English or your accent. As long as you get your message across, that is the only thing that matters. और दूसरा small talk का भी ये मसला होता है कि the only thing is कि it's just to get you comfortable and get comfortable with you. उसमें कोई ये नहीं होता. Nobody actually cares कि भाई क्या है. वो यही है कि भाई to get थोड़ा सा to break the ice, you know. To break the ice, exactly. आप ये पूछे hey how is your day going? Like what are you doing? Okay. कोई मैच हो रहा है तो पूछ लें अच्छा तो स्टीलर्स जीत गए हैं तो फलाने जीत गए हैं. अगर वो ज्यादा डिटेल पूछें तो क्या तो नहीं पता, वो कभी देखी. सही है. अच्छा, अब मुझे पता है क्या, मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई थी ना रेजिलियंस सीरीज के, तो काफी ज्यादा लोग देख रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा उसके अलावा जो है वो एक वीडियो बहुत ज्यादा ये चली कि भाई हाउ मच मनी आई विल मेक. तो आई हैव टू आस्क यू कि एज अ कार्डियोलॉजिस्ट इवेंचुअली व्हेन यू आर एस्टैब्लिश्ड, व्हाट इज द रेंज ऑफ द सैलरी, द मिनिमम एंड द मैक्सिमम nationwide, or what are the factors that impact it as well? It depends आप क्या रहे हो और आप किस एरिया में रहते हो. Obviously अगर आप बिग एकेडमिक सेंटर में हो और आपने रिसर्च करनी है, ग्रांट्स लिखनी है, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी कम है because you get funded for the grants. वैसे बेस सैलरी as far as I know 300-350 range है इसकी. It also depends on what are you doing. So if you are a procedurist, like for example आप procedures कर रहे हो, intervention, EP है, और अगर आप or like echo nukes read कर रहे हो, TT कर रहे हो, or imaging, advanced imaging, these are you can bill more for that, so it can go up. But basically these are the factors, and also area which you are living at. So agar aap big cities mein reh rahe ho, even agar if I tell you like here in Cedars, agar yahan pe इस तरह के प्रोग्राम में एकेडमिक नाम वाले प्रोग्राम आप काम करोगे, you will be on the lower limit of that range. मतलब वो ही 250 280 होगा, 300 होगा, मतलब उससे नहीं. पर अगर आप थोड़ा सा smaller community hospital में हो, your pay will be more. So there are a lot of factors, but that's like the range for it.
जस्ट टू ऐड टू दैट, जो अनम ने कहा कि देखो लोअर रेंज जो है वो 240 250 के आसपास है एक बहुत बड़े एकेडमिक सेंटर में, और अगर exactly. आप और अगर आप एक प्राइवेट प्रैक्टिस अपना क्लिनिक खोल के बैठे हो तो यू कैन मेक Okay. एज मच एज यू कैन थिंक ऑफ 6 लाख 7 लाख लोग बना Oh रहे हैं, yeah. हाँ, और इवन मोर देन दैट। तो और दूसरा ये नंबर्स जो आपको हम बता रहे हैं ना, इसमें से 40% टैक्स कटेगा, बाकी यू कैन डू द मैथ, Yeah, 40% तो definitely. टैक्स कटना है अपना। Exactly. Yeah. उसके बाद अब मुझे ये बताओ, व्हाट हैज बीन योर बिगेस्ट चैलेंज इन द पास्ट 10 years दैट यू वर्किंग? Biggest challenge? मुझे तो ऑनेस्टली सबसे बिगेस्ट चैलेंज यही लगा था, पेपर लिखना, रिसर्च करना। कभी की नहीं थी, कभी लिखी नहीं थी। रिव्यूअर्स पेपर सबमिट करा के आपने अपनी तरफ से फिट किस्म का मैन्युस्क्रिप्ट लिखा है, वो जब आता था तो उसके ऊपर कोई 10,000 कमेंट्स होते थे, ये भी नहीं सही, वो भी नहीं सही। कोई कमेंट्स ये भी होते थे कि कॉमा नहीं डले हुए तो ग्रामेटिकल एरर्स हैं, मतलब like आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, and you just feel so bad. So it takes you some time. Like पहला first manuscript पे harsh comments, even the way I was writing, the message is not clear. They will tell you, like obviously Reviewers the जो way हैं, आपका writing, exactly. हाँ, So it's getting better, but it took me some time. Like I guess that was the most challenging thing. I used to get exhausted writing all this stuff. आई विल मेक अ कमेंट कि माशाल्लाह बड़ी मेहनत की है यार आप लोगों ने, दोनों ने। और बात ये ना कि दुनिया को नजर नहीं आता और किसी को पता भी नहीं होता, और लगता है मुझे नहीं पता, देखो आई नो यू गाइस सो वेल एंड आई थॉट कि भाई ठीक है ऐसे ही खेलते सैरें करते हुए फेलोशिप्स खेलते मिल गई प्लेट में मिल गई, राइट, लेकिन नहीं माशाल्लाह बड़ी मेहनत की है, और वो मेहनत ही नहीं लोगों को नजर आती है। दैट्स व्हाई आई एम सो ग्लैड वी आर डूइंग दिस, कि भाई लोगों को मेहनत भी नजर आनी चाहिए कि कितनी मेहनत लगती है तो लोग इधर पहुंचते हैं। अच्छा, इफ यू हैव टू डू दिस ऑल ओवर अगेन, लेट्स से यू आर 2010 कहीं में पहुंच गए वापस, तो वुड यू डू एनीथिंग डिफरेंटली? maybe I will say जो हम लोग मैच हुए थे ना, कपल्स मैच, मैं बताऊं that was a gamble. वो एक जुआ खेला था जिसमें हम we got lucky and we got matched together. नहीं तो अगर आप हमारी रैंक ऑर्डर लिस्ट देखते हैं, जो हमने कॉम्बिनेशन बनाए हुए थे ना, जो आइडिया ही कोई नहीं था, we could be anywhere. Like, और initially जब आप नए आते हो, especially you don't have any family here, you need support. I think living together does matter. Like eventually 4-5 साल बाद you get stable enough कि आपको सिस्टम समझ आ गया है, you get mature enough कि आप अपने उन पे सर्वाइव कर सकते हो। तो if I have done it differently, जो कि अब मैं अपनी बहन को भी कह रही हूँ कि एक बंदा अप्लाई करे जिसकी स्ट्रॉन्गर प्रोफाइल है, गेट मैच, और अगला बंदा उसी नेक्स्ट ईयर ट्राई टू गेट इन द सेम प्रोग्राम। अगर मैंने किया होता, मतलब क्योंकि anything could happen at that time and that will be a different story. If I have started my journey alone, that will be a different story. मेरी वीडियो देखिए फिजिशियन कपल्स वाली? नहीं, चलो आई विल ट्राई टू पुट इट समवेयर अप इन Okay. देयर। उसमें मैंने एग्जैक्टली पूरे मेरी जो वीडियो का निचोड़ था ना, यू सेड इट, मैंने यही कहा था पूरी वीडियो में It कि will be दिस a इज different व्हाट। story. Yeah, definitely. और especially तो like आप कभी आए नहीं हो, मैं तो first time US, it was my first time in US, मेरी family नहीं थी US में, तो वही मैं अपनी बहन को भी अब यही कहती हूँ कि initially like later on जो मर्जी करो, when you're especially आपकी शादी भी नई नई हुई है, you have to be like literally confident about each other, और आपका relationship इतना strong होना हाँ चाहिए हाँ, कि तो you एक can दूसरे को survive समझने में alone. टाइम लगता है आपको, यू नो। Exactly, definitely, like it's totally different. So that's what I feel कि मैं करूँगी, अगर मैं I will stay behind or whoever, like I won't mind. सही। तो मुझे ये बताओ कि एनी एडवाइस फॉर पीपल इन योर शूज 10 years ago? 10 years ago, couples match मैं आपको बता चुकी हूँ, उसके pros and cons. अगर better way यही है कि एक पहले apply करे, दूसरा next year, if you really want to stay together, or if you're really desperate to just match and you cannot live with the decision कि वो मैं घर बैठी हूँ फारिग, तो then just do it and live alone, but it will be a different story. Otherwise यही कहूँगी कि keep working towards your goal, like make sure आपके decision के consequences and you have to live with it, like live with it happily, like rather than making someone's life miserable. तो ये कहूँगी। दूसरा ये कहूँगी कि जो आपका time away from graduation है, spend it wisely. It's very easy to get distracted. You will have time, you will have money. You won't feel like doing anything. Honestly, there were times I'm like, just छोड़ो परे, कुछ नहीं करते आज, बस बैठे रहते हैं. So it's very hard to overcome that procrastination जिसमें मैं I was really good, like उसमें एक दूसरे को push करना, कि like literally Numan used to tell me like तुम वैसे बैठी हुई हो, कर क्या रही हो, तुमने तो वो पेपर जो सोचा था वो लिखना नहीं है, वो खत्म हो गया. तो he was like keeping tabs on me.
So that's hard. So कभी कहा नहीं क्या पीछे पड़े हुए हैं यार, कसम से जिंदगी जीने तो रिसर्च करवा रहे हो मुझसे, मुझे याद दिला रहे हो ये करना. There were times like जब कि मैं कहती अच्छा हाँ कर लेंगे, but वो I think like if he hadn't pushed me, like मैं तो lazy इस पे इतना काम हो रहे हैं, वो हो भी सकता था कि पेंडिंग प्रोजेक्ट लेके पेंडिंग ही छोड़ दिया. You know, it's kind of funny, हर एक का अपना तरीका होता है, right? तो my way is कि मैं अपनी वाइफ को, राबिया को, I'm like, रहने दो, क्या करना है, ना करो, बस रहने दो, and then she will do it. क्यों मैं क्यों ना करूं? You know, हर एक के, तो that was Naman's way of pushing. My way of pushing is नहीं कोई जरूरत नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं, ना क्या करना क्या है. Then you know, she's like, try to overcompensate. चलो, thank you very much for sharing everything. Would you like to add anything to conclude before we finish, we wrap up? Conclusion में मैं बस यही ऐड करूंगी कि everything is possible. Like even अगर आप female हो, honestly, like whatever profession you choose, whatever field you choose, you have to live with it for the rest of your life. So just because something looks attractive, like oh I want to do GI or something or intervention, blah blah blah, just don't do it for that. Like explore, like if it's a right fit for you, like because life does get harder. Like training is hard. Working toward that goal is also harder. But as a female, I don't think so there is anything you can't do. To the guys out there, I will say like stop judging women just because ke, oh ye to bandi thi, isko to milni jani thi, ya ye green card hai, bandi hai, kya matlab isko to milni jani thi. So I think it's very, like I know some of the females out there who worked really hard, who had their struggle, who had their times. People who have families, who have kids, जिनकी एक additional responsibility है बीच में, they are doing a lot. Like it's not easy to do all this. And even like in my case, like though I don't have any commitments to my kids or anything, like I don't have kids, but then I do have responsibility for home. I do have a husband. Like I like to maintain my home. Like जिस तरह हर बंदी का होता है, तो वो factor भी साथ साथ चल रहा होता है. So we are dealing with a lot of things. Like it's not just one thing. And if you know me, like I really love to cook. Like I love to cook. So I was, yeah, I am here. So honestly, exactly. So I have life besides this. So I was literally balancing two things at the same time. So a lot of women are doing this. So it's not easy. Like just कह देना कि वो बंदी थी और उसको तो मिल जानी थी, या कोई भी feel कि वो बंदी है इसलिए वो. Stop judging. Like you don't know their journey. You don't know what they have been through. Thank you. Thank you very much for saying that. Anything else that you want to add before we conclude? No, thanks for inviting me. Like thanks for coming. Great. Thank you for taking out the time. देख लो इतना मुश्किल नहीं हुआ, right? It wasn't that bad. It was fine. Yeah, it was fine. Yeah, I know. अच्छा, तो honestly, मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा यार क्या बैठ के justification दूं कि मैं यहाँ कैसे पहुंची. ठीक है, सोचते रहे मेरा क्या जा रहा है. मतलब I don't give a damn. Like you don't need to. You know, we are doing this for juniors, not for ourselves, I know, right? But then you thanks like the way you talk to me, like we are not doing it for ourselves. We are doing it for people who are in the same shoes. And I guess that what kept me going. Like it wasn't for me. Like I don't care. Like if you still think like, oh, she hasn't done enough, that's fine with me. Like I will live with it. अब इतना कुछ सुनने के बाद भी कोई कहे कि मेहनत नहीं की लाइफ में, तो मैं क्या कह सकता हूँ. उससे ज्यादा कोई और मेहनत करके दिखा दे. अच्छा, एक बात में आई विल मेक अ कमेंट कि अल्लाह मियाँ की ना एक बहुत बड़ी नेमत होती है, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि आपको एक टॉपिक दे दिया जाए और आप उस पर लगातार बोल सको विदाउट एनी नोट्स, विदाउट एनीथिंग. एंड आई फील आई एम ब्लेस्ड विद दैट. But at the same time, I also feel you are blessed with that too. अच्छा, चैनल खोल लेते हैं कोई एक. यही मैं कहने लगा था. 3 हफ्ते पहले मेरा चैनल देखो कितना मुझे, I was surprised कि अब तक 900 फॉलो वो सब्सक्राइबर्स हो गए 3 हफ्ते में. और कर लो फारग होके एक दफा तो you know, खास तौर पे more for like physician mommies, IMGs, female friendly stuff. तो काफी लोग आपको जूनियर सुनेंगे, especially because you have that ability to talk about stuff, you know, without taking a break, without any notes. मुझे किसी ने ये मशवरा दिया था कि because I travel a lot, like मेरे but I do share like it on my Insta, like I don't use a lot of it doesn't come on Facebook. So मुझे किसी ने मशवरा दिया कि तुम ना अपना travel vlog शुरू कर दो. What I don't want, I want to enjoy the experience. I don't want to do it just for the people. Like this is very the way you are doing it. It's awesome. Like it's telling the journey. But agar if I'm all the time behind the lens, then I will not live the moment. That's my thing. Like otherwise I am not camera shy or anything, like but it's just like too much time, too much खवारी. Like मुझे होता है यार खुद ही फिर लें, अब क्या एक वो
सेल्फी स्टिक लेके हम यहाँ आए हुए हैं खैर ट्रैवल के लिए तो मुझे भी नहीं मजा आता, it's है not ना, worth it. it ruins your experience. Do you It feel ruins that? you. You're not living the moment. Exactly. You're just Yeah, that's what I documenting feel everything. So I And don't it want sounds more work rather than enjoyment when you do it. Oh yeah, definitely. Like I don't want to do it. So I'm like, मैं ठीक हूँ ऐसे ही. Chalo. Thank you very much, Anum. Really appreciate it, and I really admire you sharing your struggles, making yourself vulnerable, and coming out in open and sharing everything. So I hope everyone, you guys learned something from it. You got some insight, some wisdom, and if you did, please like this video, share it with others, subscribe to the channel, ring on the notification bell, and like I always say, never give up, never lose hope, and always work hard. Yep. Allah Hafiz. Thank you so much, Assalamu alaikum. Roy. Allah Hafiz. Allah Hafiz.